अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Namaste. As the countdown for Pranapratishtha of Sri Rama comes to an end at Ayodhya, this is our last episode as an offering of Rama 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 the Resonance from Indica Academy. I am Dr. Yogini Deshpande, co-founder and editor at Indica today. Today we are blessed to have the presence of Sri Sri Abhinava Shankara Bharati Swami, 72nd Peethadipati of Srimad Jagadguru Shankaracharya, Dakshinamnaya of Kudali Sarada Peetha of Kudali Sringeri Mahasamsthana, located at Kudali in Karnataka. This Samsthana, this Matha has a parampara of 2500 years, and we will be interviewing Param Pujya Abhinav Shankaracharya ji today. My first question to you, Swamiji, is that Sri Rama is considered as Maryada Purushottam in everyday language. In Valmiki Ramayana also, there are many references like Ramo Vigraha Dharme, saying Rama is Dharma personified. Can you elaborate on specific instances where Rama's actions align with the core tenets of Dharma in itself? मातर्मे मधुकैटभग्निमहिष प्राणापहारोद्यमे हेला निर्जितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरिते Durge Namaste Ambike. Yes, as you asked, we are heading towards the Prana Pratishtha of Sri Ramlala at the Ayodhya Ram Temple. As you said rightly, that Rama is described as the Maryada Purushottam, Ramo Vigrahan Dharmaha, etc. in many places. To understand how Rama is personification of the Dharma, we have to understand the nature of Dharma, because the world has been misunderstood due to various reasons in the past 300 years. Dharana, Dharma, etc. are the etymological explanations. We can go into the etymology and define the Dharma, but we have other sources also to understand the Dharma. For instance, the Manusmriti, the Manu says, Dhriti Kshama Damasteyam Shaucham Indriya Nigraha Dhir Vidya Satyam Akrodha Dashakam Dharma Lakshanam. These are the 10 characteristics of Dharma. What are they? Dhriti, Kshama, Dama, Asteya, Shaucha, Indriya Nigraha, Dhi, Vidya, Satya and Akrodha. If we start talking about these characteristics, 10 lakshanas of Dharma, that itself becomes a lecture. So, we will not get into that much detail today. But let us take few of them and try to understand whether Rama had them or not. Kshama, second one. You may see ample number of incidents in the Ramayana where Rama showcased absolute Kshama, starting from the Kaikeyi up to the return to the Ayodhya in the war space. He forgave so many people. Forgiving not because they did some mistake. Forgiveness is not about the other person. Forgiveness is about ourselves. If we are able to reconcile and make peace with the truth that something has gone wrong, and if we establish peace in ourselves, then only the Kshama happens. We may say, oh, I have forgiven you, you go away. That is not the Kshama.
Kshama is an internal quality. So Rama had it. He had no bitterness towards anybody. Despite facing lot of mistreatment from various people, he had no bitterness towards anybody. That is one characteristic of dharma, which is kshama. Similarly, asteya. Asteya, he did not try to steal away anything from anybody. Even though he killed Ravana and he earned the Lanka, he gave it away to the Vibhishana and returned empty-handed. Asteya, we should not try to acquire something which does not belong to us. The intention of the war was to bring back the Sita, and that's what he did. He could have acquired the Lanka as well, but he did not do that. Similarly, he killed the Vali also. After killing the Vali, it was easy for him to eliminate Sugriva also and acquire that place. So you may see many incidents in his life where he follows the asteya. Asteya, aparigraha. Aparigraha also is one of them. So he did not ask anything from anybody. He did not ask for any favor from anybody. Even some people might object that dharma that are mentioned by the Manu in the Rama's character. So in this way we may say that or Rama the personification of the dharma. One of the important aspect of dharma is to care for others. We have to consider the entire creation as ourselves, and we have to care for it as if we are caring for ourselves. As a mother cares for her child, in that way we have to care for the world. That is the nature of Sanatana Dharma. You see many people saying that Rama was following the Pitruvakya. Pitruvakya Paripalana Parayana is one of his name also. So people assume that he followed whatever his father asked him to do. But if you see closely, at the time of departure, his father begged him to stop. His father begged him to stop, forced him to stop. But he did not stop. So in that scenario, he did not obey his father's words. Why? If he is a Pitruvakya Paripalana Parayana, he should have listened to everything his father says. But Rama knows that this is what we have to do because it is good for the father. It is not good for me. He did not bother about his well-being or his survival or his reputation. He thought, if I do this, this will bring Kirti to my father. And my father has promised something to somebody. It is not only a social reputation thing. Spiritually also and family-wise also, if Rama disobeys whatever Kaikeyi is asking, it would have led to something else in the family. And his father would have suffered. We may say, oh, his father died because of it. But that death also is better than what would have happened. What would have happened. So in that way, he did whatever was good for his father. Therefore, he had to disobey his words at the time of departure. So in this way, Rama cared for others and he had the Viveka Buddhi, what is good for this person. Somebody might come and ask something to eat in a house. A child might come and might ask something to eat. Out of love, the mother might end up giving whatever the child is asking. But the thing that is given might harm the kid also. So the mother knows what is to be given and what not to be given. So in that way, Rama protected everybody around him without bothering himself. That is one of the major quality of the dharma which he personified. I hope that answers your question. Thank you. Yes. Gitopadesh by Sri Krishna is often quoted for matters concerning conflicts in dharma. Similarly, how can the teachings of Sri Prabhuram
address contemporary conflicts that we face in our life and how those teachings can be imbibed in our life. The Gita is in the form of a conversation between Arjuna and Krishna. Also, the Adi Shankaracharya mentions in his Bhashya that the whatever form we have today in the name of Bhagavad Gita is a composition of Vedavyasa, not the word-to-word conversation that happened in between Krishna and the Arjuna. Therefore, we have a format that is very easy to interpret and quote. As people very often quote the Swami Vivekananda's sentences because he was delivering lectures and it is very easy to pick certain lines from the speeches of Swami Vivekananda. Similarly, the Gita also. But we don't see such conversation or incident in the Ramayana. Therefore, we don't have the lengthy conversations of Rama with somebody which can be compiled in a book. Or as teachings per se. As teaching per se. Otherwise, not otherwise, as Gita, nobody has compiled something out of Ramayana as a separate teaching or separate scripture. Therefore, we don't find very commonly something similar to the Bhagavad Gita in the Ramayana. But there are various conversations. Rama had conversations with Hanuman, and Rama had conversations with Bharata, Lakshmana, etc. At the time of rain, when the Vali was killed and they are waiting for the Sugriva to start the search for the Sita, Rama and Lakshmana were together alone, staying in a cave. At that time, Rama speaks a lot of things with the Lakshmana. Those things are very useful even today in the contemporary world. Similarly, whatever the Rama spoke with Sita in the Chitrakoot, those can be interpreted in the contemporary way and utilized. Similarly, the conversations between Jambavanta and the Rama. And after returning to the Ayodhya also, what Rama spoke with the Vasishtha is politically. Basically, the contemporary world requires peace between people, states, districts, nations, because there are so many divisions today. Because the Western idea of life is division. For instance, recently somebody was describing a great personality and was saying that, that person, so and so person cared for the language also, he cared for the Ayurveda also, he knew Rasavidya, he knew yoga. So, in this kind of a description was being given about a person. I said, wait, he did not master all of them, or he was not intentionally was caring for all of them. He was caring for life. And he knew some Pranavidya. Therefore, he knew so many things. So, it is your understanding that all of them are isolated and separate things. This is the problem with the Western mind, that we see everything in a bits and parts. Therefore, we think family conflict is something else, a social conflict is something else. So, interpretation is happening in that way only. For example, some social scientist comes and tries to understand the society and makes some interpretations, and he sees so many problems. But in reality, those are not problems at all. There are certain differences only. So, he exaggerates those problems and writes down, and it gets into the print and becomes social science. And that social science is manipulated by the vote bank, and the differences are more deeper, and society gets more and more divided, and it becomes very difficult to bring peace among them. So, in that context, you are asking how can we use the Ramayana and Rama's character, etc., to bring the peace or make the peace. So, first of all, if we understand the true nature of our life,
and start caring for the world as Rama did. We look at the world affectionately as a mother looks at her child. So the moment we starts feeling like a mother towards the society, we don't see any problem in the society. But the mass population don't have that much maturity to look at the society the way Rama looks at it. Therefore, our tradition has been that a Raja, a ruler, should have certain qualities. The Kshatriya has to have certain education, has to have certain qualities. Then only he is anointed as a king to rule the kingdom. In today's time, we don't have such system, and we very rarely see qualities of Rama in the rulers. There was a system of education which prepared people like Rama, and there was a eligibility criteria to become a king also, because gatanugatiko lokah na lokah paramarthikah. There is a saying in Sanskrit. Everybody follows the proven path. If there is some in the land, agricultural land, some path is there, some 4 people or 5 people have walked, the grass is, you may see the signs of some people walking in that path. Everybody follows that way, assuming that this is the way. So in that way, that is the nature of the society. Gatanugatiko lokah. We should not expect the maturity, the kind of maturity that we expect in a Rama or king. We cannot expect that maturity in the society. Therefore, there will be only few mature people. Only they should rule the country, because they make the policies or make decisions with that intention, or with the maturity of a mother towards her child. So, if we have to bring the Rama's quality in the contemporary world, we should think about our democracy first. Is it wise to continue as it is and expect mature leaders, or we should change the system to bring some mature and responsible rulers? So that's the first thing that we have to do if we want to bring qualities of Rama into the contemporary world. As I said earlier, it is very difficult to expect everybody in the country to have the qualities of Rama. Therefore, only rulers should be like Rama. Not only, rulers must be. Rulers must be like Rama. Therefore, we have to change the criteria to become a ruler in this country. Then that is possible. There are many other things that we can bring into the contemporary world. But the most important one is the eligibility criteria for somebody to become a ruler must be brought into the contemporary world. Since forever, Swamiji, Bharatiyas have had to constantly justify why they do what they do, including our way of life, not only to the rest of the world, but also many a times to our very own people. Our cultural and religious sentiments are constantly questioned, and this includes the significance of the Ram Mandir at Ayodhya in our lives. Why does this happen, Swamiji? It happens because their worldview is different. If you see from the Socrates, etc., initially they said man is a social animal. That is their idea of mankind. Later they said, oh, man is a socio-political animal, socio-political and economical. So the idea of man evolved over the period of time, but the animal at the end stuck. So basically they consider human being as one more animal which requires society, economy, politics, etc. Because the worldview, the idea of life itself is different in the West and East. The idea of life is different because they consider mankind as a one more animal which requires certain additional things. Therefore, their idea of life is to survive and have more and more pleasures, because life comes only once and you have to enjoy the life. This is the atheist idea of life, and the religious idea of life is afterlife only. This life has no meaning or no purpose. The only purpose is to achieve the afterlife.
So therefore, their perception towards life itself is different. Therefore, we look at us in a different way. Our idea of life is different. For instance, you may see the folk literature, bhakti literature, or shastras, or whatever it is. We give a lot of importance to the human life. Even in Viveka Chudamani, the Adi Shankaracharya says, Jantunam Narajanma Durlabham Atah Pumstvam Tato Viprata. The human life is very precious and rarely you get it. Once you get into the human life, there is a lot of potential to evolve. You may grow into a devata also. You may evolve into a devata in the human body. That is the potential of a human life. So that we understood. Therefore, we designed certain things in our society which is very alien to them. For them, ahara, nidra, bhaya and maithuna are the important things. If you are doing something other than this ahara, nidra and bhaya, maithuna, they think you are doing something stupid thing. Based on that, they see politics, oppression, caste, etc. in everything you do, because they don't understand the purpose of what you are doing. They come from an experience where they had oppression and so many other things. So therefore, the interpretation ends up becoming limited to the political only, political interpretations only. They don't see the other aspects of it. So that's why they look at us in a different way. Yeah, the other questions. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि प्रभु राम हमारे मन में बसते हैं तो मंदिर की क्या आवश्यकता है, क्यों न एकत्रित धनराशि का उपयोग जन कल्याण के कार्यों में किया जाए। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे स्वामी जी? प्रभु राम तो हमारे मन में भी बस सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। हमारा ये कहना है प्रभु राम तो ऑलरेडी हमारे मन में है, फिर भी हमको मंदिर चाहिए। वो क्यों चाहिए वो देखेंगे पहले, वो बाद में देखेंगे। उससे पहले प्रभु राम हमारे मन में कैसे है इस बात को देखेंगे। प्रभु राम अलग और हम अलग ऐसा भी हम नहीं मानते हैं। हम तो अपने आप को परब्रह्म स्वरूप मानते हैं ना। भारतीय लोग जो है, हिंदू लोग जो है, अपने आप को ही परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यानी आप एक दीपक है, इस एक दीपक से आप दूसरा दीपक जलाएंगे। अब जो है दूसरा दीपक आने के बाद पहला वाला दीपक जो है छोटा नहीं हो जाता है, उसका प्रकाश भी कम नहीं हो जाता है। और ये नया दीपक कहाँ से आया? ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से परमात्मा जो है ये ज्योति स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है। उस परमात्मा से, उस परमात्मा के अंश के रूप में जो बना है वह भी परमात्मा ही है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए राम जी अलग, हम अलग, ऐसा जब हो तभी राम जी हमारे मन में बसेंगे, ये सवाल पैदा होता है। हम तो ये मानते हैं कि हम भी श्री राम हैं, सच्चिदानंद स्वरूप के रूप लेवल पे जब हम जाएंगे और हम में और श्री राम जी में अंतर ही नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। परब्रह्म के स्तर पर, मनुष्य के स्तर पर राम जी जो है एक देवता है, अवतार है। यदि आप कहना चाहे तो ऐतिहासिक व्यक्ति भी है। उनका मंदिर हमको चाहिए। मंदिर मन में बसना और मंदिर होना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। मंदिर हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। पहली बात तो आस्था की बात हम बाद में करेंगे। हमारा राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र में सूर्यवंश, चंद्रवंश नाम के दो प्रधान वंश थे। उनमें से एक वंश में एक अवतार हुआ श्री राम जी का। उन्होंने जी कर दिखाया कि कैसे जीना चाहिए। उनको आप देवता भी मत मानिए, तब भी आप देखेंगे ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी देखेंगे, तो उन्होंने जी कर दिखाया कि कैसे जीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमारे पूर्वज रहे, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इसमें उनकी क्या समस्या है? ऐसा व्यक्ति हमारे पूर्वज रहे, यही बात हमें राष्ट्र को बताना है, हमें अपने बच्चों को बताना है। बताने के लिए ऐसे ऐतिहासिक पुरुष कहाँ जन्मे, ये हमको अपने बच्चों को दिखाना है। दिखाने के लिए हमको वहीं पर मंदिर चाहिए। आप उनको भगवान मत मानिए, देवता मत मानिए, केवल ऐतिहासिक पुरुष के रूप में मानने पर भी हमको मंदिर चाहिए। देवता मानने पर तो चाहिए ही चाहिए, परब्रह्म मानने पर भी चाहिए हमको, क्योंकि हम सगुण उपासना करने वाले लोग हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मंदिर में आते हैं या उपासना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। गीता में कृष्ण जी कहते हैं
कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। यानी 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं। कैसे कैसे लोग? आर्ता, द वन हु हैज़ बीन बीटन बाय द लाइफ, ही इज लुकिंग फॉर हेल्प, ही इज सीकिंग हेल्प। आर्त, आर्तनाद जिसको कहते हैं, वैसा आर्त, जो आर्त स्थिति में है वो भी आता है। दूसरा वाला जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा है, वो आता है। और अर्थार्थी, मुझे मेरे बेटे को रैंक दिलवा दो, मेरे बेटी की शादी करवा दो, ऐसे जो अर्थार्थी कुछ पाने की दृष्टि से आता है, वो अर्थार्थी है। और ज्ञानी, जो समझते हैं कि ये जो राम जी है ये परब्रह्म स्वरूप है, परब्रह्म ही राम जी के रूप में अवतार हुआ था, ऐसा जो जानते हैं ज्ञानी लोग जो है, वो भी राम जी की उपासना करते हैं, क्योंकि उनकी उपासना के लिए राम जी एक उपाधि है। उस उपाधि के माध्यम से जो है, आकार के माध्यम से हम निराकार की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पुरुष मानने पर भी, देवता मानने पर भी, अवतार मानने पर भी, और परब्रह्म मानने पर भी, किसी भी हालत में हमको राम जी का मंदिर वहीं पर चाहिए। इसमें किसको क्या समस्या हो सकती है? और धन की बात आती है। धन तो जो है, विश्व में बहुत सारा धन है। हम मिट्टी को, ज़मीन के अंदर से कुछ लोहा निकल के बेचेंगे तो भी पैसा आता है। आपको उसी राम मंदिर के पैसे पर ही क्यों नज़र आपका गड़ा हुआ है जी? उस पैसे से आपको क्या समस्या है? हम अपना धन किसी भी प्रकार से हम स्पेंड करते हैं, इससे हम टैक्स भरते हैं। टैक्स भरने के बाद जो बचा है उसी से हम दान किए हैं, और उसी पैसे से मंदिर बन रहा है। आपको उस पर कोई अधिकार है ही नहीं। टैक्स देने के बाद उस पैसे पर आप बात ही नहीं कर सकते कोई। इसलिए ये लीगली भी ठीक है, स्पिरिचुअली भी ठीक है। हम अपना धन किसी भी प्रकार से हम व्यय कर सकते हैं, इसलिए किसी को ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए जी। This is sort of a bit of 2 questions. I'll make into 2 make into one sort of this. But what I was coming, my first part of the question was after the demolition of Ayodhya temple in the 1500s, there were a lot of saints who ensured that his essence continued to be there amongst the people. And I'm talking this coming from Maharashtra. We had Samarth Ramdas, we had Sridhar Swami, who built a lot of different mathas in of Sri Rama, of Hanuman and everyone. What was it that gave them that motivation to do it? What would for today's young person who didn't live through those eras where people ensured that Sri Rama's essence was kept through, and the memory of Ayodhya was kept through, what made that bhakta, and what was for the today's generation? Because for today's generation the temple will be made. Tomorrow the temple will open, especially the ones who have born after 90s. Even for many of us in this room today, some of us might have been car sevaks. We have seen car sevaks, so at least a part of the struggle has been observed for us. But the generation, our children, they have not they don't know. Today they only will see the temple being opened and not the fight behind it. So for them, what was the essence of this bhakti? What was that deep rooted motivation to do to be in rooted in Sri Rama and have faith in being able to build the temple? That was first part of the question. And the second part, again, for the younger generation, once the temple is built and it is opened up, what next? What do they need to do to ensure that this civilization will continue to thrive? मंदिर निर्माण के बाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से भी अब हमारा अगला पड़ाव क्या होगा? जी, आप लोगों ने 3 सवाल पूछा है, तीनों को मिला के हम हिंदी में ही जवाब देंगे जी। पहली बात तो ये है कि आपका कहना था कि महाराष्ट्र इत्यादि में समर्थ रामदास आदि लोगों ने काम किया, जिसके कारण राम भक्ति बनी रही। और राम जी के मंदिर के उद्ध्वस्त होने के बावजूद भी राम भक्ति लोगों में कैसे बनी रही, और किस कारण से राम भक्त जो है इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में जुड़े। इसमें 2 बातें हैं। जब समर्थ रामदास जी जैसे लोग
राम भक्ति का प्रसार कर रहे थे तो उनका उद्देश्य केवल राम भक्ति का प्रसार करना नहीं था। वे लोग भी राम जी की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ और विषय से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो राम जी के विषय में किसी को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है भारत में, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग जुड़े हुए। घरों में अभी चंदमामा, अमर चित्रकथा इत्यादि ये प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद प्रारंभ हुए। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पूर्व कैसे बने रहे ये भी हमें देखना पड़ेगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, विजुअल, ऑडियो इत्यादि आने से पहले भी राम जी घर घर में बने हुए थे। उसके साक्ष्य हमें हर जगह मिलता है, हर गांव में मिलता है, हर घर में मिलता है। आप दक्षिण भारत में आओगे तो सेतुरामन नाम जो है इतना कॉमन है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तमिलनाडु में आप कन्याकुमारी की ओर जाएंगे तो, उसी तरह आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे या फिर तमिलनाडु के अलग भागों में जाएंगे, कर्नाटक में आएंगे तो जयरामन, सीताराम, ऐसे सीता, राम इत्यादि नाम इतने कॉमन हैं। ये घरों में दादियाँ जो है बचपन में बच्चों से बात करती थी तो रामायण के रेफरेंसेस लेके ही बात करती थी। आज के ज़माने के हिसाब से पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी उन दादियों का या दादाजियों का ऐसा कन्वर्सेशन होता था कि वो रामायण के माध्यम से ही अपने संतानों को शिक्षा देती थी। इसमें हमें एक बात ध्यान में देना पड़ेगा कि हाल ही में एक इतिहास के विषय में किसी से हम बात कर रहे थे, इतिहास लेखक के विषय साथ। उनका ये कंप्लेंट था कि हमारे लोगों ने हिस्ट्री लिख के नहीं रखा। संस्कृत के हिस्ट्री ग्रंथ कहाँ हैं, हिस्ट्री कहाँ है संस्कृत में? इतने सारे संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ है, संस्कृत डिपार्टमेंट्स है, मगर हिस्ट्री ही नहीं लिखा गया। ये उनका शिकायत है। उस समय हम ये कह रहे थे कि हमारे इतिहास लिखने की प्रक्रिया अलग है। हम हर विषय को जो है शिक्षाप्रद, एजुकेटिव बनाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव नहीं। एजुकेटिव बनाना चाहिए, उसमें मौल्य इम्पॉर्टेंट है, उसके फैक्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। इस तरह से हम लोगों ने ओरल ट्रेडिशन में या फिर घरों में बच्चों को ऐसे चीज़ें बताए जिससे उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो। उसमें हिस्टोरिकल तथ्य भी थे, ऐतिहासिक तथ्य भी थे, मगर हमने उस पर ध्यान न देते हुए केवल शिक्षा के रूप में हमने काव्यों का प्रयोग किया। जैसे वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण में कि हम क्या कहने जा रहे हैं, तो सीताया चरितम महत, सीता की महत्तर चरित्र को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। वो अनाउंस कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि रामायण का पर्पस जो है सीता जी का चरित्र बताना, सीता जी कैसे जिए। तो इसमें हम हिस्ट्री ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम। तो ये अब रामायण हम किसी की बेटी को घर में बताएंगे तो सीता जी के गुण उसमें आए, इसी उद्देश्य से हम बताएंगे ना। तो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का ही अवलंबन किया। इसलिए सभी के घरों में ऑलरेडी राम जी थे, सीता जी थे, हनुमान जी थे। अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने कल्चर के हिसाब से। अब दक्षिण कर्नाटक में जो है उनका ये कहना है कि कृष्ण जी कैसे कपड़े पहनते थे, इसका हमको साक्ष्य जो है उनके बनाए हुए चित्रों में मिलता है। अब जो जहाँ पर कृष्ण जी थे वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है, वहाँ की गर्मी ज़्यादा हो सकती है या फिर ठंड हो सकती है, वहाँ कपड़े पहनने का ढंग अलग हो सकता है। मगर इनका ये कहना है ये लोकलाइजेशन है, इन्होंने अपने स्थान पे लोकलाइज करके कृष्ण जी को देखा। उसी तरह राम जी को भी। आंध्र में आप जाओगे, बापू जी का पेंटिंग बहुत विख्यात है। बापू जी की पेंटिंग्स में आप देखोगे तो राम जी आंध्रा वाले लगते हैं। हाँ, तो ऐसे हमने उसको लोकलाइज किया, बहुत सरल बना के अपने अपने घरों में हमने रखा था। उस राम जी के भक्ति के कारण लोगों को जोड़ना रामदास जी जैसे लोगों को सरल हुआ। ऐसे पब्लिक सोशल मूवमेंट के कारण राम जी घरों में नहीं आए, उसके एजुकेटिव नेचर के कारण राम जी घरों में थे। और वो भक्ति के माध्यम से भी थे कि एजुकेशन में भक्ति इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज एजुकेशन अलग, भक्ति अलग, स्पिरिचुअलिटी अलग, धर्म अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया है हम लोगों ने। मगर हम भक्ति, एजुकेशन ये सब हम एक साथ हमारा होता था ना। तो राम भक्त जो है हर घर में बच्चे होते थे जो भी एजुकेटेड है। अगर भक्ति नहीं है वो तो अनएजुकेटेड है, ऐसा ही हम मानते हैं।
इन्फॉर्मेशन कितना उसके पास है उससे हम उसको एजुकेशन ही नहीं मानते ना। तो कितना भक्ति है, कितनी धार्मिकता उसके अंदर है, उससे हम उसके एजुकेशन को हम नापते हैं। तो उस प्रकार एजुकेशन के माध्यम से ही राम जी हर घरों में पहुँचे हुए थे, राम सीता जी हनुमान सब लोग पहुँचे हुए थे। इसलिए रामदास जी का आंदोलन हो या फिर अयोध्या राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, इन सामाजिक आंदोलनों में या राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों को जोड़ना इसलिए सरल हुआ क्योंकि वो पहले से ही जुड़े हुए थे। उनको नए सिरे से बताना नहीं पड़ा कि राम जी नाम के एक व्यक्ति थे, वो हमारे आदर्श पुरुष थे, अवतार पुरुष थे, उनका मंदिर ऐसा उद्ध्वस्त हुआ है, आप सब लोग जुड़िए, ऐसा फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन देना नहीं पड़ा। इस वजह से मंदिर उजड़ने के बावजूद राम जी को कोई उजाड़ नहीं पाया। ये प्रक्रिया भारत के एजुकेशन सिस्टम की ये सिग्निफिकेंस है, कारण एजुकेशन सिस्टम ही कारण है कि राम जी घर घर में बसे हुए थे। जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना के बाद हम वास्तविकता में राम राज्य की प्राप्ति से कितने कदम दूर हैं तथा मंदिर निर्माण के पश्चात अब सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से हमारा अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? मंदिर अब बन चुका है, तो आगे का रास्ता क्या है? आपके सवाल के दूसरे भाग में आपने ये पूछा कि आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता यदि हम राम राज्य मानकर चलते हैं, राम राज्य बनाना यदि हमारा लक्ष्य है, तो राज्य जो है अर्थ से बनता है। राज्य जो है अर्थ से बनता है। अर्थ में जो है अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब पैसा नहीं, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के कारण जो है राज्य बनते हैं, यानी पॉलिसी, बेसिकली पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, सोशल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज़। महाभारत में एक इंसिडेंट आती है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद भीष्म जी जो है शरशैया पर लेटे हुए थे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए। उस समय भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि क्या बुद्धू लोग, तुम लोग इतने महान व्यक्ति, सुशिक्षित व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वहाँ पर लेटा हुआ है, उससे जाके कुछ सीखो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तब जो है पांडव जाके वहाँ उनसे बात किए। तब भीष्म जी ने बहुत सारी चीज़ों को बताया। भीष्म जी ने जो भी कहा वही अनुशासनीय पर्व है। उस अनुशासनीय पर्व में हम ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें देखते हैं, इकोनॉमी इत्यादि। उसमें युधिष्ठिर एक सवाल पूछते हैं कि कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम, यानी बुरा वक्त आने के कारण बुरा राजा आता है या फिर बुरे राजा के कारण वक्त बुरा होता है। तो भीष्म जी उत्तर देते हैं कि ऐसा संशय ही मत रखो, इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। ऐसा डाउट ही मत रखो क्योंकि राजा ही काल का कारण है। आज हम अभी बेंगलोर शहर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है? जो पहले जिन्होंने पॉलिसी बनाया, उस पॉलिसी के कारण यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हो या ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, पानी का प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती है। एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, फिर भी हम कह देते हैं कि महायंत्र और महानगर ये दोनों हानिकारक होते हैं। हाँ, महायंत्र यानी सेंट्रलाइज्ड मास प्रोडक्शन यूनिट। हमारे पूर्व के पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया कि वेस्ट को कॉपी करके उन्होंने हमारे यहाँ से लोहा चुरा के, आयरन को चुरा के ले जाके उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कॉपी करते हुए हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, करने की कोशिश की गई और एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए गए और वहाँ पर लोगों को आके काम करना पड़ता है। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, फोर्स्ड माइग्रेशन गाँवों से होता है। उस फैक्ट्री वर्कर्स के अलावा, उस चाकरी के अलावा, जी कहते हैं उत्तम कृषि मध्यम व्यापार अधम चाकरी। तो जो काम अधम माना गया वो काम को वैल्यू मिल गया कि शहर में नौकरी करता मतलब वो एक्सपेक्टेड मैन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन बदल के आज ऐसी स्थिति है कि अर्बनाइजेशन की वजह से त्रस्त हो चुके हैं लोग। गाँव से लोग जो है इतना माइग्रेट हो रहे हैं कि मेट्रो
सेंटर्ड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये सब कैसे हुए? पॉलिसीज़ के कारण ही। राजा कालस्य कारणम। आज दिल्ली में इतना पॉपुलेशन है तो राजा कालस्य कारणम। तो ऐसे राम राज्य की भी यदि हम बात करते हैं तो केवल राम भक्त मिलकर राम राज्य नहीं बना सकते। पॉलिसी मेकर्स को अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मतलब क्या कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन बिताना है तो उसके लिए कैसा परिसर चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होना चाहिए, और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि नदी सूखते जा रहे हैं, नदियों में पानी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम कैसे होने वाला है। तो नदी के प्रॉब्लम को आइसोलेटेड बना के उसको पृथकतया अलग से हम एड्रेस करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए, होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो सके। ये हमारा वैदिक विजडम में मिलता है, राम राज्य में मिलता है। तो उन पॉलिसीज़ को स्टडी करके, वैदिक वर्ल्ड व्यू को समझ के होलिस्टिकली पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसीज़ के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगे, तो राम राज्य की ओर हम बढ़ेंगे। तो सरकार ये स्वयं नहीं कर पाएगा क्योंकि सरकार को ये डर रहता है कि वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। हम ड्रास्टिकली कुछ चेंज लाएंगे मगर अगले इलेक्शन में हमको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ग्रास रूट लेवल में पॉलिसी के इम्पोर्टेंस के विषय में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए और उस सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट होने के बाद पॉलिसी मेकर्स को ये करेज आएगा कि हम ये पॉलिसी बना सकते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन में हमें वैदिक वर्ल्ड व्यू, वैदिक पॉलिसीज़, इनके बारे में बताना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस आना पड़ेगा पॉलिसी के विषय में, तब जो है राम राज्य आ पाएगा। केवल और एक मंदिर बनाना या फिर ऐसे मंदिर और बनाना या रेप्लिका बनाना ये ठीक है, व्यापार की दृष्टि से, आइडेंटिटी की दृष्टि से, उत्सव मनाने के लिए मंदिर चाहिए, सब ठीक है। मगर उस मंदिर को जाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता अगर बनाना है तो पॉलिसी मेकर को ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिसी को नेग्लेक्ट करके हम कुछ बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिसी लेवल पे काम होना चाहिए। आगे मंदिर के बाद में पॉलिसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है। जी जी जी। धन्यवाद स्वामी जी। और हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमसे वार्तालाप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि हम आगे इस पर और विचार कर सकेंगे। थैंक यू। बहुत सारे लोगों से बात करने का, हमारी बात को पहुंचाने का अवसर हमें इंडिका अकेडमी के माध्यम से मिला है। इसलिए हम इंडिका अकेडमी के सभी श्रोताओं को और इंडिका अकेडमी जो काम करते हैं उन सभी को हम आशीर्वाद देते हैं। ये राम राम।